हेलो एवरीवन, आर यू प्लानिंग टू गो फॉर अ ट्रिप? ट्रैवलिंग पाउच में क्या क्या रखें, क्योंकि मेकअप तो बहुत ज़रूरी है. लेट्स स्टार्ट विद द टोनर एंड द मॉइस्चराइज़र. फॉर ट्रैवलिंग यू कैन स्किप द टोनर. एक दो दिन टोनर नहीं लगाएंगे तो इट विल नॉट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बट यू कैन नॉट स्किप द मॉइस्चराइज़र. जो आपको गलती से भी मिस नहीं करना है वो है सनस्क्रीन. आप प्राइमर भी रख सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका मेकअप पूरे दिन टिके. Carrying a concealer of same shade of as your skin tone and a tinted moisturizer is a good idea. It's an overall good idea. And you can also carry this tinted moisturizer from Maybelline. It's such a wonderful product. तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ या concealer and tinted moisturizer both will work. I will never suggest you to carry बहुत makeup and foundations with you for traveling. It is a no color powder for setting your base, and the best thing is it is in a compact form, so it should be in your bag, traveling bag. And I don't suggest for traveling कि आप loose powder carry करें. This is the blush, and you can use the same blush for your eye shadow also. Do not forget to keep your eyebrow pencil and mascara. कैरी करने के लिए when you are on trip ऐसे वाले आईलाइनर्स सबसे अच्छे होते हैं. लिपस्टिक तो आप छोड़ नहीं सकते हैं, तो रेनी के ये कॉम्पैक्ट पेन्स आते हैं जिसमें आप 10 शेड कैरी कर सकते हैं. अगर आप देखें तो ये सारे बोल्ड कलर है और ये सारे न्यूड कलर्स हैं, तो इन शॉर्ट आप 10 कलर लिपस्टिक के कैरी करके ले जा सकते हैं. यू कैन ऑल्सो कैरी दिस सेटिंग स्प्रे इन अ टाइनीस्ट फॉर्म, और यू आर गुड टू गो विद योर ट्रैवलिंग बैग एंड इट इज़ पैक्ड.